Well, up next we have the women's 100 meters T38 start list for the finals. पैलोमैक्वी, कैरन तातियाना पैलोमैक्वी लीड नंबर 5 में, 7 में हैं एंगल निकोल, मेरिया मोरालेस। अच्छा स्टार्ट मिला है मेरिया मोरालेस को। मेरिया मोरालेस इस समय लीड कर रही हैं, लेकिन पैलोमैक्वी भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। मेरिया मोरालेस इस समय गोल्ड मेडल की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन पैलोमैक्वी फोटो फिनिश बहुत मुश्किल है। क्या ये मेरिया मोरालेस ने इस रेस को जीत लिया? जी हाँ, मेरिया मोरालेस ने अपने आइडल को पीछे छोड़ दिया है और चैंपियनशिप रिकॉर्ड को नए सिरे से गढ़ दिया है। 2 दिन में 2 चैंपियनशिप रिकॉर्ड इस 16 वर्षीय युवा एथलीट के नाम। कोलंबिया के नाम गोल्ड मेडल, कोलंबिया के नाम सिल्वर मेडल। लेकिन क्या कमाल का प्रदर्शन इस 16 वर्षीय एंगी निकोल मेरिया मोरालेस। कल 12.36 सेकंड का समय निकाला था, आज 12.34 सेकंड का समय निकाला है। There was a time she started off really well. The comeback was on by Palomecchio, but in that last 15 meters, watch that surge, that stride, that kick. And she just knew she had it in the bag. कैरन तातियाना पैलोमैक्वी मोरिनो, जो पेरिस पैरालंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज उन्हें सिल्वर मेडल से संतुष्ट करना पड़ेगा। और लीटा मारिया ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब हुई हैं। मेरिया मोरालेस 12.34 सेकंड, 2 दिन में 2 चैंपियनशिप रिकॉर्ड। कैरन तातियाना पैलोमैक्वी मोरिनो 12.36 सेकंड सीजन बेस्ट रहा है। लीटा मारिया 12.72 सेकंड, उनका भी सीजन बेस्ट रहा है। Women's 100 meters T47 finals coming up. Back-to-back action here on the track. J3. ब्रिटनी मेसन को बढ़िया स्टार्ट मिला है, लेकिन रॉड्रिगेज पर नजर रखिए। एना ग्रिमाल्डी भी बढ़िया स्टार्ट करने में कामयाब हुई हैं। रॉड्रिगेज और ब्रिटनी मेसन के बीच टक्कर है। रॉड्रिगेज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर को हरा दिया है और जीत लिया है। कियारा रॉड्रिगेज ने एक बार फिर गोल्ड मेडल। कल हीट में भी ब्रिटनी मेसन को मात दी थी और आज फाइनल रेस में भी कियारा रॉड्रिगेज ने 11.97 सेकंड की टाइमिंग के साथ सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। यहां तक ब्रिटनी मेसन और कियारा रॉड्रिगेज के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन मेसन पिछड़ती चली गई। रॉड्रिगेज ने अपनी गति बढ़ाई और नंबर 1 फिनिश किया है। ऑगस्टा ड सिल्वा को मिला है यहां पर सिल्वर मेडल। क्या एना ग्रिमाल्डी टॉप 3 फिनिश करने में कामयाब रही हैं? ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन 11.97 सेकंड सीजन बेस्ट टाइमिंग के साथ रॉड्रिगेज के नाम गया है गोल्ड मेडल। ऑगस्टा ड सिल्वा के नाम गया है सिल्वर मेडल। और मैरी नगोई जो फ्रांस की हैं 12.29 सेकंड पर्सनल बेस्ट के साथ उन्होंने जीता है। Well, we'll see if the athletes here can get whipped around the track with the guides using their tether. So they're away in the women's 400 metres T11 final. And the favourite Simplicio de Silva, who is in lane 3 with Felipe Veloso de Silva, her guide. Trying to get up on the inside of Moko, who's losing a little bit of form. Simplicio de Silva is now rounding into the final 100 metres and goes past Moko. The guide, Sapalo of Moko, has had a look across and realises that Simplicio de Silva is coming past him and has gone past him by about 10 metres now. It's just a case of making sure you get across the line. The athlete goes first, ahead of the guide, and it is Simplicio de Silva. The finger's gone up for the victory from the guide, Veloso de Silva. And it is victory for Brazil in the women's 400 metres T11 final. So 59.76 for Simplicio de Silva, 4-time world champion now. Moko, brilliant run from her, lifetime best. She took it out hard, 101.42, and a season best for Baldera gives Peru another medal at these championships after picking up a gold medal on the opening day. They now have a bronze medal to go with it. Men's 400 T34 final coming up. McCracken स्लो स्टार्ट मिला है
रतन्ना और मैक्रैकन के बीच जोरदार संघर्ष चल रहा है। रतन्ना अब इस स्ट्रेट पर अपनी बढ़त को किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। रतन्ना वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, चैंपियनशिप रिकॉर्ड होल्डर, गोल्ड मेडल की दहलीज पर है। मैक्रैकन अब पीछे छूट गए हैं और रतन्ना क्या अपनी टाइमिंग को सुधार पाएंगे? जी नहीं, 48.01 सेकेंड की टाइमिंग के साथ चायवात रतन्ना फिर मैक्रैकन को पीछे छोड़ दिया, उनके इरादों को पीछे छोड़ा और अपने बुलंद हौसले से इस रेस को जीती। तारीफ करनी पड़ेगी मैक्रैकन की भी, उन्होंने काफी टफ फाइट दी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर को। Well, those are the three gentlemen who are going to be celebrating later on today. 400 meters, T34 finalists, medalists, enjoying their day in this calmer, cooler evening in New Delhi. महिलाओं की 800 मीटर T53 यानी व्हीलचेयर रेस का फाइनल होने जा रहा है। क्या यहां पर एक नया कीर्तिमान बनाएंगी? इनके रिकॉर्ड की फहरिस्त में पैरालंपिक के 6 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप के 6 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड मैराथन के 6 गोल्ड मेडल इनके नाम हैं और पेरिस पैरालंपिक्स की ये गोल्ड मेडल इनके नाम है। अच्छा स्टार्ट मिला है इस समय और लंबी रेस है 800 मीटर की। विपिन, जब आपके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है और आप हीट में बढ़िया प्रदर्शन करके आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव भी होता है उसको फाइनल में उसी अंदाज में रेप्लिकेट करने के लिए। चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनने की दहलीज पर डी ब्रुयना नजर आ रही हैं। डी ब्रुयना काफी तेजी से फिनिश लाइन की तरफ, चैंपियनशिप रिकॉर्ड बना दिया है कैथरीन डी ब्रुयना ने। यहां पर 1 मिनट 40.16 सेकेंड, सिल्वर मेडल कहां जा रहा है और सबसे पीछे फिनिश करने में कामयाब हुई हैं। यहां से तो ऐसा लग रहा है शायद अभी भी आ रही है, लेकिन कैथरीन डी ब्रुयना चैंपियनशिप रिकॉर्ड 1 मिनट 40.16 सेकेंड। चीन की झू के नाम क्या है सिल्वर मेडल और जिनसे उम्मीदें थी तुर्की की हमीदे, उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सारा जेम्स न्यूजीलैंड की पिछड़ गई। As Catherine seals the deal with a championship record of 1 minute 40 seconds.16. Women's 800 metres T54 start list for the final. And off they go. And already falling up somewhat is Akers there. He's got some work to do. Didn't get away very quickly. A little bit of space there. Melanie Woods nicely positioned on the outside. Juju Kwan, who took silver last year, has gone out 2 or 3 lanes wide, and she's trying to make the run as they head down. It's Bayakula who puts the afterburners on, and Bayakula's moving away. Zhu's trying her best down the outside. She goes past Woods, but it's going to be Bayakula who takes it. 1:48.88 the time, and Bayakula picks up a gold medal at the World Para-Athletics Championships. Bayakula takes it from Zhu, and Melanie Woods of Great Britain with a bronze medal for her. So there's confirmation of it that Bayakula takes the gold medal in the women's 800 metres T54. Zhu with a silver, and Melanie Woods of Great Britain with the bronze medal. The final of the men's 400 metres T53. So it's Fairbank, Hunt, Al-Karashi, Payo, Yu, Gritsenko, Khalifi and Arsai. This is going to be a lot of fun. Arsai on the outside. I think any one of these could win it. Paralympic bronze for him as well. But it's Payo who's coming clear. Payo, the 9-time global champion. 3 world goals, 6 Paralympic goals. Surely he's going to hit double figures now. He's way clear. He's looking at the clock. The world record is his. 46.11. It's going to be a gold. It's going to be fast. It's going to be Payo. 46.82. I think Yu has beaten Gritsenko to take the silver medal, but that in the end was all about Pongsator and Payo. He's done it again. They've got a great team in the 53s and the 54s, and Pongsator and Payo gets gold for Thailand. So Payo takes the gold for Thailand, Yu the silver for Korea, and the neutral Gritsenko the bronze.
It's a long lineup, and we have some host representation as part of the men's long jump T42 classification. Daniel Wagner of Denmark. And off he goes. Looks like a real good jump. Couldn't quite keep his foot beyond that blue line. It will be a tough mark to beat. Oh, gets a good jump, good jump. Is it a white flag? That's the first question. Yes, it is. And that looked well beyond 7 feet. Watch this here on that board, taking off so far ahead. Could have easily been a lot closer to that 8-foot mark. But I do believe this will be his personal best at the World Championships. 7.38, that's the number to beat. But not enough to take the gold away from De Jong. Many of these men have started jumping these huge distances, really showing what was possible jumping on a blade. But now, Jules De Jong with Team Netherlands cheering him on there for his final jump. And that was so big, so much power. You could see he almost lost control in the air, having to fight to control those rotational forces. So much power he generates. Now, he's already won, he knows that, but he's going to be watching with an eye on that mark to see if he can improve that championship record. 7 meters 37, it won't be an improvement, but it doesn't matter. Really entertaining, and it was Jules De Jong who just stood there, gave a very casual wave to the camera, and then surprised everybody with that win in the 100 meters. Sometimes the quiet ones are the most dangerous, but you can see he's not so quiet anymore, really growing into his stature as a Paralympic champion and a world champion. आखिरी प्रयास के लिए आएंगे। एगार शैपेनिस कुल मिलाकर के 8 एथलीट हैं। एगार शैपेनिस तीसरे एथलीट हैं, और चूंकि एथलीट एक प्लेटफॉर्म पर रह कर के थ्रो करते हैं, तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि एक एथलीट अगर उसको प्लेटफॉर्म पर बिठाया गया है और स्ट्रैपिंग कर दी गई है, तो प्रेफरेबल ये है कि वो एक ही बार में अपनी पोजीशन चेंज करने के बजाय उसी पोजीशन से एक के बाद एक 6 थ्रो करें जो उनके लिए निर्धारित होते हैं, और उसके बाद दूसरे एथलीट की बारी आती है। 19.32 आखिरी अटेम्प्ट 19.15 का रहा, लेकिन 19.32 मीटर उनका जो सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस था वो उन्होंने दिया। So what a competition that's building up here. The men's F52 classification. The last throw for Zoltan Besenye of Hungary. 7.37 is his best throw. He's at the number 2 position. Velimir Sandor of Croatia. The men's discus throw F52 final. She needs to go further up towards that 25-meter mark. Croatia's Velimir Sandor, 20.14, his personal best. 17.47. He's at number 3. If he can manage to touch 18, do wonders to him. Almost a similar distance for us. Velimir Sandor. He's got 4 more attempts and he's gone up to 18.09. Men's discus, it is an 8th world title for Igor Zapinis of Latvia. You saw those throws from him earlier.
So the dethroned champion, Andrei Russia of Brazil, silver for him. Velimir Sandor of Croatia, he takes the bronze, having taken silver in this last year in Kobe. And Zoltan Besne of Hungary in fourth, the best ever javelin result for the 3 in a row former European rally champion of the last decade and well-known Hungarian motoring journalist. We are going back to the women's javelin throw F34 classification final. Kaiyun Zhuo of China with a personal best of 19.44. She's going to pose a lot of challenges if she manages to throw beyond 19 meters. .58 at number 1, Zhuo. Oh, she's surprised with that. We took an advantage there. She's not very pleased with that decision. It was a long throw. She probably thought it's going to fetch few more centimeters for her in this throw. That's not happened. Frances Herman. Personal best has been 18.94. Season best 17.96. That's the last attempt and falling short of what she must have imagined, set up in her mind. The season best is 17.96. Personal best 18.94. Correct throw call by the judge sitting behind her. 17.74. And now 17.91. But that's going to keep her at number 3. China's Kaiyun Zhuo with 20.58 at the top. Dana Crease of Australia with 18.97. देश की राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली में जहां पर 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। महिलाओं का जेवलिन थ्रो इवेंट है, F34 कैटेगरी है और ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 10 एथलीट मैदान में हैं, परख पर दावेदारी पेश कर रहे हैं और 10 में से 3 एथलीट जो हैं वो चाइना से आते हैं और चीन की ऐसी ही एक एथलीट जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस है 22.55 मीटर का। ये जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था लंदन में 2017 में 23 जुलाई 2017 को 20.67 मीटर का, उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सीजन बेस्ट को पीछे छोड़ दिया है। क्या बेहतरीन प्रयास है इस बार, शायद ये अब तक का सबसे अच्छा थ्रो होना चाहिए। फुल बैक स्विंग है, फुल बैकवर्ड डेंटिंग है और उसके बाद परफेक्ट और उसी जगह जी हाँ 21.41 लगातार सुधार करते हुए अपने प्रदर्शन में बिल्कुल रिलैक्स दिख रही हैं। There's that women's javelin F34 from earlier. The new championship record for Zhao Lijuan. That great victory in the Paralympic Games last year. Another world title for her. Zhao Kaiyun, the silver for China. And Dana Crease, great result for the 23-year-old Aussie. And an Oceania record debut, 18.97. महिलाओं में शॉटपट F20 कैटेगरी में कुल मिलाकर के 10 प्रतियोगी हैं। भारतीय प्रतिनिधित्व थ्रो इवेंट्स में थोड़ा कम है, शॉटपट या डिस्कस थ्रो में। फिलहाल खिलाड़ी अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस समय आपके स्क्रीन पर हैं जापान की राइना होरी। पहला अटेम्प्ट उनका 21 साल की राइना होरी 12.81 पर्सनल और सीजन बेस्ट है, वैलिड अटेम्प्ट है। Anais Mendes of Ecuador with a personal best of 14.06.
should not be equivalent to her personal best for sure. Austin of France, 11.77 her personal best. She's done 11.46 this season. Left-hander. And knows that the tough competitors who go beyond 14 meters, 13 plus. The leader is Sabrina Fortune with the 15.75 world record. And that's the world champion, Sabrina Fortune, is dictating terms here. She's happy with her throw. The crowd backs her up. 15.75 is her... she's created a world record now. It was her personal best, but 1 meter more than her world record. Forget about the championship record. She's created a world record here. First throw, and she says, I can't believe this. कुल मिलाकर के 3 एथलीट थे न्यूट्रल पैरा ओलंपिक ग्रुप से, और उनमें से स्वेतलाना फिलहाल अनुपस्थित। जैदसेवा अपना पहला प्रयास कर चुकी हैं दूसरे प्रयास के लिए एरिना पर। तेरह मीटर के आसपास की दूरी तय की है। 13.60 उनका पर्सनल बेस्ट है। मीटर का रास्ता उन्होंने तय किया था। 11.21 से शुरुआत की थी, 11.28 पर पहुंची थी। इक्वेडोर की 2 पैरा एथलीट हैं। एनाइस मैंडिस 13.32 इससे पहले। Well, then born on January 18th, 2000, she made a Paralympic debut in the 2016 Summer Paralympics. She's won a bronze medal in the women's F20 shot put at the 2020 Summer Paralympics in Tokyo. Women's javelin F34 earlier, going to Zhao Lijian of China. That was the first event of the night. So Sabrina Fortune with a world record. She has won the women's shot put F20. The Paralympic champion, her 4th world title in a row. Ebrar Keskin, that was a very significant result for her. For Turkey, that's her first ever championship medal, silver, and she's still only 18 years old. Alexandra Zaitseva with the bronze, the reigning European champion. पुरुषों में जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी के मुकाबलों का आगाज होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडियन रिप्रेजेंटेशन है। अजीत सिंह भारत के एथलीट और रिंकू। Well, the men's javelin throw F46 final. 3 athletes from India going in this. We're in the 3rd round currently. It is Rinku who leads. And we have Ajit Singh who's in 3rd position. And Gurjar, also of India, is in 5th position. And Rinku, by the way, set a championship record with his very first throw. So Ganiev, his lifetime best, 54.15 in the opener. He didn't beat that one in the second. And you heard a cheer in the background then, because the man who is at the top of the pile and broke the championship record is off for throw number 3. And that has travelled some distance. He's been nothing but consistent, has Rinku. He was 5th in Rio in 2016. He's won 4 national golds. And here's the Mexican, Gabriel. He's in 4th position, 61.20, a season best with his 2nd attempt. That won't improve it. Well, Geniev's gone with his first attempt in the last 8, so his 4th was 49.68. And Takahashi Shunya, who's 58.29 with his best, in 7th position, as they go in the descending order now from 8th position for Yamazaki, who was 7th at the Tokyo 2020 Paralympic Games.
Well, that's pushing out midway between the 50 and 60 metre mark, which is where he's pretty much been. For me, javelin is one of the only events where you will consistently see athletes like Singh right now wearing a back brace. It just goes to show the amount of forces that go through your body on that release. Well, Singh 61.77, a season best. What's he got in the tank here for himself? He got plenty of cheering from the crowd, but didn't do the job. Now here's Rinku. He's at the top of the pile because with his last attempt, when he was second last to go, when they reversed the order in the top 8, he rocketed past the 64.11, which was the championship record of Gurjar. Here goes Rinku, 66.37, his best so far. And that isn't going to improve. Now, it's not going to be an improvement, but just if we get the replay, have a look at this runway. I was watching it from side on, and often we get the shot from head on, but... Attempt number 5, currently in second position. Everyone will have one throw left after this, and that's out over the 60 metre mark, but by how much? He likes it. I don't think it's enough to get past Rinku, though, who's 66.37. He may be around the 63 metre mark or so. He did like it when he released. India go 1 and 2, and Cuba in third position with the bronze. Gurjar celebrates as well. So men's javelin throw F46, championship record for Rinku, who takes the gold. Gurjar, even though he did have the championship record at one point, has to settle for a season best in silver. The former world champion, the Paralympic champion, Verona Gonzalez, season best for him with bronze. And India just missing out on the trifecta, Ajit Singh in fourth position.